start with our new chapter, that is chapter number 3, and the name of the chapter is the human reproduction. And today we will start with our part number 1. Before starting this chapter, that is the human reproduction, we are already discussed the various aspects, that is in chapter number 2, that is the sexual reproduction in the flowering plants. And today we will start with this chapter, that is the human reproduction. So as all we know that reproduction is the process, that is the ability to produce the young ones. And reproduction is further of two types, that is the sexual reproduction and asexual reproduction. In asexual reproduction, only single parent is involved, whereas in sexual reproduction, both the parents are involved. And the main basic concepts that are involved in the human reproduction are: first is the gametogenesis, second is the insemination, third is the fertilization, fourth is the blastocyst development, fifth is the implantation, sixth is the embryo development, and the last basic step that involved in the human reproduction is the parturition. So all these steps, that is the basic concepts that are involved in the human reproduction. Our next important topic of this chapter, that is the human reproduction, is the male reproductive system. So let us see the diagrammatically representation or the diagrammatically section view of the male pelvis showing the reproductive system. So this is the diagrammatically representation of the male pelvis that's showing the reproductive system of the male reproductive system. This is the ureter, and after ureter, this is the seminal vesicle, and after seminal vesicle, this is the urinary bladder that is used for the urine purpose. After the urinary bladder, outside the urinary bladder, this is the vas deferens, and after that, below the urinary bladder, this is the prostrate, and after prostrate, this is the penis, and inside the penis, this is the urethra, and below the urethra, this is the glans penis, and outside this penis, this is the covering of the skin that is known as the foreskin. These are the testes, and these are the male reproductive organs of the male part, and after the testes, this is the scrotum, and after that, these are the bulbourethral gland, and outside these, this is the anus, and this is the rectum, and just opposite to the prostrate, this is known as the ejaculatory duct. So this is the diagrammatically section of the male pelvis showing the reproductive system. Next is the male reproductive system has 4 main parts. That means our male reproductive system, it is divided into 4 major parts, or male reproductive system has main 4 parts. And what are these parts? These are: first is the testes, second is the accessory duct, third is the glands, and the fourth is the external genitalia. That means our male reproductive system, it has divided into 4 major parts, and these 4 major parts are the testes, second is the accessory glands, third is the glands, and the last is the external genitalia. First, we will start with our testes, that is the singular testes. So what are the main features about the testes? Testes situated in the pelvic region. That means testes जो होंगी वो कहाँ situated करेगी? Pelvic region पर, outside the abdominal cavity. That means testes are situated in the pelvic region and outside the abdominal cavity with a pouch, और उस abdominal cavity के साथ एक pouch होगा, जिस pouch का जो नाम है that is known as the scrotum. That means हमें ये पता चल गया है कि testes की जो location है, testes कहाँ पर lie करेंगे? Testes are located in the pelvic region outside the abdominal cavity with a pouch, and that pouch is known as scrotum. Our next important factor of the testes is scrotum is a small muscular sac. अब जो scrotum है ये क्या है? एक small muscular sac है that contains and protects the testes. तो ये जो scrotum है एक small muscular
सैक है जो क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है किस चीज को, ये टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल मेल। अभी किस चीज का पार्ट है, एक्सटर्नल मेल जेनिटिलिया एंड इज लोकेटेड बिहाइंड द पेनिस। दैट मीन्स हमें ये पता चल गया है कि स्क्रॉटम जो है, स्क्रॉटम इज अ पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल मेल। अब ये जो पार्ट है स्क्रॉटम किस चीज का है, एक्सटर्नल मेल जेनिटिलिया का पार्ट है एंड दैट इज लोकेटेड बिहाइंड द पेनिस। और ये कहां लोकेट करता है, पेनिस के बिहाइंड में लोकेट करता है। नेक्स्ट इज द टेस्टिस आर प्लेस्ड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा भी कि टेस्टिस जो होती हैं दे आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी सो एज टू मेंटेन द टेम्परेचर। अब ये जो टेस्टिस हैं लोकेट करती हैं आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी एज टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। और वो क्या करती हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करती है, बॉडी टेम्परेचर को, दैट इज 2 to 5 डिग्री सेल्सियस, 2 to 2.5। और मतलब इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कितना मेंटेन करके रखती है, 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस। दैट इज लोअर देन द एवरेज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, जो कि ह्यूमन बॉडी की नॉर्मल टेम्परेचर से क्या होती है, लोअर होती है। अब हमारा जो मेन पर्पस था यहाँ पर कि टेस्टिस जो है वो क्या करती है, टेस्टिस जो होती हैं वो कहां लाई करती हैं, दे लाई आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी एंड मेंटेन द टेम्परेचर दैट इज बिटवीन 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। दैट इज लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जो कि हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे बिल्कुल लोअर होता है। नेक्स्ट इज द लोअर टेम्परेचर इन टेस्टिस इज रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये जो लोअर टेम्परेचर है वो किस चीज के लिए उसकी जरूरत होती है, दैट लोअर टेम्परेचर इज required to maintain the spermatogenesis। ये spermatogenesis के लिए जरूरत होती है इस लोअर टेम्परेचर की, as the normal body temperature can lead to mutation in the sperms। क्योंकि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो किस चीज को लीड करता है, म्यूटेशन ऑफ द स्पर्म्स को। ऑन द बिहाफ ऑफ दैट रीजन दैट मीन्स द बॉडी नीड्स द लोअर बॉडी टेम्परेचर as compared to the normal human body temperature because they can be lead to the mutation of the sperms. Next, what is the shape of the testis? Testis is oval in shape. Testis जो होती हैं इनकी shape जो है that is oval in shape. It is 4 to 5 centimeter long और इनकी जो length है long, जो इनकी लंबाई है वो कितनी है 4 to 5 centimeter and 2 to 3 centimeter wide। और ये चौड़ाई जो होती है that is 2 to 3 centimeter। Each testis has about 250 compartments। हर एक testis में near about 250 compartments होते हैं। That means each testis can contain near about 250 compartments and that compartments are known as testicular lobules। और उन हम compartments को जो है वो क्या बोलते हैं, that is they are known as the testicular lobules। So this is our first main reproductive organ, that is the testis. After the testis, this is the diagrammatically representation of the spermatic cord and this spermatic cord contains the muscles। अब ये spermatic cord जो होंगी, this is the diagrammatically representation of the spermatic cord and this spermatic cord contains the muscles, blood vessels, nerves and the vas deferens। That means this spermatic cord जो है that contains the muscles, blood vessels, nerves and the vas deferens। So all these they are to be included in the spermatic cord। So this is the vas deferens, this is the vas deferens। After vas deferens this is the epididymis and after epididymis inside the epididymis these are the seminiferous tubules। That means each lobule contains 1 to 3 each lobule contains 1 to 3 highly coiled। इसका मतलब ये हो गया कि जो ये seminiferous tubule है ये क्या कंटेन करता है, 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules को जो है वो क्या करता है, ये कंटेन करता है। तो seminiferous tubule जो होते हैं they are the site for the meiosis। ये seminiferous tubule जो होंगे वो किस चीज के लिए यूज होंगे, they are used for the site of the meiosis and that leads to the formation of the spermatozoa। और यहीं पर जो है
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होंगे वो म्योसिस की प्रोसेस को लीड कर वो किस चीज की फॉर्मेशन को लीड करेंगे? दैट मींस दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ. सो दिस इज द डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड, एंड इन द स्पर्मेटिक कॉर्ड वेरियस मसल्स, वेरियस नर्व्स, various blood vessels and the vas deferens, they are to be included in the spermatic cord. So each lobule contains 1 to 3 highly coiled. हर एक जो आपका lobule है वो क्या contain करता है? 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules. Seminiferous tubules क्या होते हैं? Seminiferous tubules are the site for the meiosis where the formation of the spermatozoa takes place. So this is the function of the seminiferous tubules that lead to the formation of the spermatozoa. So this is the diagrammatically representation of the spermatozoa, and these are the Sertoli cells, and outside the Sertoli cells, this is the spermatogonium. This is the spermatogonium, and in the center, this is the lumen, and these are the Leydig cells. And outside the Sertoli cells, this is the basal membrane or basal lamina, and this basal lamina surrounding the seminiferous tubules. ये basal lamina जो होता है, it surrounded the seminiferous tubules, and this is the spermatozoon in human, and this is the differentiating spermatids. This is the spermatid, and after the spermatid, this is the secondary spermatocyte, and after the secondary spermatocyte, these are the primary spermatocyte, and this is the spermatogonium, and outside the spermatogonium, this is the basal lamina. And the further divisions that takes place in the spermatogonium, primary spermatocyte, secondary spermatocyte, as well as spermatids, that is the mitosis, meiotic division 2 and the meiotic division 1, and the last is the mitosis. So this is the diagrammatically representation regarding the spermatozoa. So our next important concept is that the inner lining of each seminiferous tubule, inner lining जो है हर एक seminiferous tubule की consists of 2 types of cells. हर एक जो inner lining होगी seminiferous tubule की, that means it contains the major 2 types of the cells, and these 2 types of the cells are the spermatogonia, and the other important type of the cell is the Sertoli cell. That means the seminiferous tubules, it contains the major 2 types of the cells, that is number 1 is the spermatogonia, and the second type is the Sertoli cells. Spermatogonia are the immature male germ cells. Spermatogonia है, these are not the mature germ cells, but these are immature germ cells that undergoes meiosis. और यही जो spermatogonia होते हैं आपके, जो कि एक immature cells है, they undergo meiosis, और meiosis की प्रोसेस में जाने के बाद they leads to the formation of, वो किस चीज की फॉर्मेशन को लीड करेंगे? स्पर्म्स की. दैट मीन्स जो हमारे स्पर्मेटोगोनिया है, जो कि आपकी एक तरह से इमेच्योर सेल्स है, और इमेच्योर सेल्स होने की वजह से दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, और जैसे ही वो मियोसिस की प्रोसेस के अंदर जाएंगे, दैट मीन्स दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म. स्पर्म्स की फॉर्मेशन जो होगी वो उस दौरान होगी. Each spermatogonium is diploid. हर एक spermatogonium जो है वो क्या है? Diploid है, and it contains the 46 number of the chromosomes. तो 46 क्रोमोसोम्स को जो है वो ये कंटेन करता है. तो हर एक स्पर्म जो है, स्पर्मेटोगोनिया जो है, दैट इज डिप्लॉयड, दैट इज ट्रूएंट, एंड इट कंटेन्स नियर अबाउट 46 क्रोमोसोम्स, और इसमें जो क्रोमोसोम्स का जो नंबर है दैट इज 46. Sertoli cells provide nutrition to the spermatogonia. That means जो आपके Sertoli cells हैं, they provide nutrition to the spermatogonia. Spermatogonia को जो nutrition मिल रही है, that means that nutrition they have to be got from the Sertoli cells. Next is interstitial spaces. What do you mean by the interstitial spaces? These are the regions outside the seminiferous tubule. ये ऐसे regions हैं, that means
जो आपके इंटरस्टिशियल स्पीशीज है ये ऐसे रीजन्स हैं जो कहां पर लाई करते हैं, दे लाई आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो एरिया है, जो स्पेसिस होंगे, दैट स्पेसिस इज नोन एज द इंटरस्टिशियल स्पीशीज। दे कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स। अब इन इंटरस्टिशियल स्पीशीज के बीच में क्या होंगे, स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं, सम इम्यूनो competent cells and interstitial cells और द लेजिक सेल्स। अब इसमें मेन चीजें क्या है सर्टोली सेल्स में, लेजिक सेल्स है, ब्लड वेसल्स है एंड सम इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स है। ऑल दीज दे आर इंक्लूड इन द सर्टोली interstitial species. Next is legic cells. These are the cells that synthesize and secrete testicular hormones called androgens. तो जो आपके लेजिक सेल्स हैं ये एक तरह से ऐसे सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, सिंथेसाइज एंड सिक्रीट। ये सिंथेसाइज करते हैं एंड आफ्टर द सिंथेसाइजेशन दे सिक्रीट द टेस्टिकुलर हार्मोन्स एंड दैट टेस्टिकुलर हार्मोन्स दे आर नोन एज द एंड्रोजेंस। सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द लेजिक सेल्स. So this is the diagrammatically representation of the seminiferous tubule. So this is the Sertoli cells and this is the epithelial covering outside the cells. This is the epithelial covering and inside the epithelial covering these are the interstitial cells, and after interstitial cells these are the spermatocytes, and inside the spermatocyte these are the spermatids. So this is the diagrammatically representation of the seminiferous tubule. Our next important male reproductive organ after the testes is the accessory duct. What do you mean by the accessory duct? हम क्या समझते हैं कि accessory duct क्या होता है? The accessory duct transport the sperms. The main function of accessory duct is to transport the sperm. Body में जो sperms का transportation है, that is with the help of accessory ducts from the testes to the urethra. मतलब accessory ducts का जो main function है, that is to transport the sperms from the testes to the urethra. अब वो sperms का जो transportation है वो कहां से हो रहा है, टेस्टिस से कहां से हो रहा है, यूरेथ्रा में, फॉर द रिलीज आउटसाइड द बॉडी, और फिर वो उसको कहां रिलीज करते हैं, आउटसाइड द बॉडी. देयर आर 4 accessory ducts in the male reproductive system. That means हमें ये पता चल गया कि accessory ducts जो होते हैं उनका जो मेन काम है, the main work of the accessory duct is to transport the sperms from the testes to the urethra outside the body. And there are mainly 4 types of the accessory ducts that involved in the male reproductive system. First is the retitestis, second is the vasa efferentia, third is the epididymis, fourth is the vas deferens. That means our 4 major types of the accessory ducts that are involved in the male reproductive systems. First is the retitestis, second is the vas efferens, third is the epididymis, and the fourth one is the vas deferens. So let us start with the retitestis. Retitestis, what is the main function, what is the main work of the retitestis in the male reproductive system? Retitestis, these are the ducts that connect the seminiferous tubule of the testis to the vasa efferentia. अब जो मेन वर्क है retitestis का वो क्या है, that means they कनेक्ट द, अब जो रेटिटेस्टिस होंगी वो क्या करती हैं, वो कनेक्ट करती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को ऑफ द टेस्टिस किसके साथ, विद द वासा एफरेंशिया. दैट मींस द रेटिटेस्टिस दे कंटेन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस टू द वासा एफरेंशिया. वासा एफरेंशिया, दीज डक्ट्स लीव द टेस्टिस. वासा एफरेंशिया जो है वो क्या करता है, दे लीव द टेस्टिस, वो टेस्टिस को लिव करता है एंड ओपन इनटू द एपिडिडमस. जैसे ही वो वहां पर जो टेस्टिस को है जो वो छोड़ देता है, वासा एफरेंशिया जो होता है, उसके बाद जो है वो कहां पर ओपन करता है उनको, एपिडिडमस में. दैट इज लोकेटेड इन द पोस्टीरियर पार्ट
ऑफ द टेस्टिस। अब वो कहां पर लाई करता है जो आपका एपिडिडमस है? द मेन लोकेशन, द मेन पोजिशन ऑफ द एपिडिडमस दैट इज लोकेटेड इन द आउटसाइड और द पोस्टीरियर सरफेस, नॉट आउटसाइड बट ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ईच टेस्टिस। तो एपिडिडमस जो है वो आउटर सरफेस जो है या पोस्टीरियर सरफेस जो है, नॉट आउटर बट पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ईच टेस्टिस। तो जो वसा फ्रेंशिया उसकी जो लोकेशन है that is the posterior surface of the each testis. Next, epididymis. It is located on the posterior surface of each testis. Epididymis जो है वो कहाँ locate करता है? On the posterior surface of the each testis and opens into the vas deferens. हाँ, मतलब ये कहाँ पर जो है वो लाई करता है? posterior surface of the testis पर, और उसके बाद वो किसमें ओपन करता है? vas deferens में. Next is the vas deferens. It is a duct that ascends into the abdominal cavity. अब ये कहाँ ascend करता है? आपका vas deferens जो है, it ascends into the abdominal cavity and loops over the urinary bladder. और किसके ऊपर लूप करता है? urinary bladder के ऊपर. After that, it receives a duct from the seminal vesicle. उसके बाद जो है वो वहां से क्या receive करता है? It receives the seminal vesicle and that seminal vesicle opens into the urethra as a ejaculatory duct. और वो उसके बाद किससे ओपन करता है? वो ओपन करता है यूरेथ्रा में एज अ पार्ट ऑफ द इजैकुलेटरी डक्ट. नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय इजैकुलेटरी डक्ट? दे स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म्स. वो स्पर्म्स को स्टोर भी करते हैं एंड आफ्टर द स्टोरेज दे ट्रांसपोर्ट द स्पर्म्स. पहले वो स्टोर करेंगे, स्टोर करने के बाद उनको वो ट्रांसपोर्ट करेंगे स्पर्म्स को फ्रॉम द टेस्टिस. टेस्टिस से वो उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे टू द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा. आउटसाइड उसको वो ट्रांसपोर्ट करेंगे थ्रू विद द हेल्प ऑफ द यूरेथ्रा. नेक्स्ट इज यूरेथ्रा. व्हाट यू मीन बाय यूरेथ्रा? इट इज अ थिन मस्कुलर ट्यूब. यूरेथ्रा जो है एक काफी पतली मस्कुलर ट्यूब है एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर. और यूरेथ्रा जो है इसका ओरिजिन जो है दैट मीन्स our urethra that it is originated from the urinary bladder. After that it then passes through the penis. उसके बाद वो किसके थ्रू passes करेगा? Through the penis to its external opening. पेनिस के थ्रू पास होते हुए फिर वो कहाँ ओपन करेगा? इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग. जो उसके एक्सटर्नल ओपनिंग होगी दैट एक्सटर्नल ओपनिंग इज नोन एज द यूरेथ्रल मीटस. और उस एक्सटर्नल ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल मीटस. So this is the diagrammatic view of the male reproductive system. So this is the diagrammatic view of the male reproductive system. Part of the testis, जिसमें कि क्या है आपकी part of the testis to show the inner details. इसमें जो है male reproductive part का view है जिसमें कि हमारी testis जो है उसमें क्या शो करे? inner part of the testis. testis के अंदर जो inner parts हैं जो है उनको ये शो कर रहा है. So this is the ureter, that is the small thin muscular tube, and after ureter this is the vas deferens, and after vas deferens these are the epididymis, and below the epididymis this is the vas afferentia, and after vas afferentia these are the retitestes, and this is the testicular lobules, and all the functions of these, that means accessory ducts, we have already discussed earlier what are the various functions of these accessory ducts. This is the glans penis and this is the foreskin outside the penis, and beside that these are a pair of testes, and this is the urethra, and this is the bulbourethral gland, and after bulbourethral gland this is the prostate, and these are seminal vesicles which are yellow in color, and after that this is the urinary bladder. So this is the diagrammatic view of the male reproductive system which showing the inner part of the testes. Next is the accessory glands. अब next जो हमारा important concept आता है that is the accessory glands. अब accessory glands कौन कौन से होते हैं? Various types of the accessory glands are there. First is the seminal vesicles. Second is the prostate gland. Third is the bulbourethral gland. So these are the three types of the accessory glands that are present in the male reproductive system.
अब इनमें ग्लैंड्स का जो वर्क है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ दीज ग्लैंड्स? द मेन फंक्शन ऑफ दीज ग्लैंड्स आर दे सिक्रीट प्रोडक्ट्स. ये क्या करते हैं? ये प्रोडक्ट्स को सिक्रीट करते हैं एंड आफ्टर द सिक्रीशन ऑफ द प्रोडक्ट्स दे मिक्स विद द स्पर्म्स. जैसे ही वो प्रोडक्ट्स को सिक्रीट करेंगे, आफ्टर दैट दे मिक्स विद द स्पर्म्स. वो स्पर्म्स के साथ जो होंगे वो मिक्स कर जाएंगे. So this is the main function. These are the main function of the various types of the accessory glands. Next is the seminal vesicles. They contribute approximately 60 to 75% of the fluid in the semen. अब जो main function है seminal vesicles का, अब देखो seminal vesicles क्या करते हैं? Seminal vesicles जो है वो contribute कर रहे हैं approximately 60 to 75% of the fluid semen. मतलब जो सेमेन फ्लूइड है उसमें नियर अबाउट 60 to 70% जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. एंड द सिक्रीशन आर, अब इसमें जो सिक्रीशन है दैट आर इन प्रोटैनस, एंजाइम्स, फ्रक्टोज, विटामिन सी, फॉस्फोफाइल, कोलिन एंड प्रोटैग्लैंडिन्स. So these are the various types of the secretions that are present in the seminal vesicles. The high fructose content provides nutrient energy. जो high fructose content होगा, that means it provides the nutrient energy for the spermatozoa. अब spermatozoa को जो energy मिल रही है, that means they give energy from the high fructose content that provides the nutrients to the spermatozoa. Next is the prostate glands. It secretes slightly alkaline milky fluid. ये जो है वो स्लाइटली एल्कलाइन मिल्की फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड्स. विदाउट प्रोस्टेट ग्लैंड्स दे डोंट सिक्रीट द मिल्की एल्कलाइन फ्लूइड. दिस हेल्प्स इन द सर्वाइवल ऑफ स्पर्म्स. अब जो स्पर्म्स जो होते हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं, वो जी रहे हैं, दैट मीन्स दीज स्पर्म्स दे हैव टू बी सर्वाइवल विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोस्टेट ग्लैंड्स. दिस हेल्प्स इन द सर्वाइवल ऑफ द स्पर्म्स इन द एसिडिक वेजाइनल एनवायरमेंट. मतलब उस एसिडिक वेजाइनल एनवायरमेंट में भी वो स्पर्म्स को क्या कर रहा है? सर्वाइव करवा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस अल्कलाइन मिल्की फ्लूइड. द सिक्रीशन आल्सो इंप्रूव्स द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म्स. अब जो इसकी जो सिक्रीशन है वो स्पर्म्स को मोटिलिटी में हेल्प करती है, स्पर्म्स को मूव करने में हेल्प करती है. दैट मीन्स दे हेल्प इन द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म्स. Next is the vulvourethral glands. The secretion of this gland lubricates the penis. Vulvourethral gland जो होते हैं, ये इनकी जो secretion होती है वो क्या करती है? Lubricates the penis. Penis को lubricate करती है and neutralize any residual acidity in the urethra. और कोई भी अगर acidity होती है urethra में, that means that acidity in the urethra that is neutralized with the help of this vulvourethral glands. So this is all about the male reproductive system. Next, our next important topic of the human reproduction is the female reproductive system. So let us start with our female reproductive system. The human female reproductive system is specialized to support the process of gametogenesis. अब जो main purpose जो है, the main important criteria of the female reproductive system is to सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो होगा वो विदाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बिना नहीं होगा. ओवुलेशन नहीं होगी विदाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फर्टिलाइजेशन नहीं होगी विदाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. प्रेगनेंसी नहीं होगी, बर्थ नहीं है, एंड आफ्टर चाइल्ड केयर. सो दिस मीन्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ द गैमेटोजेनेसिस, for the process of evolution, for the process of fertilization, for the process of pregnancy, for the process of birth, and after the birth for the process of the child care. That means the parts of the female reproductive system are various parts of the female reproductive system are a pair of the ovaries, a pair of the oviducts, ureterus, cervix, vagina, external genitalia, and the last is the mammary glands or the mammary glands. That means these are the 7 important parts that are involved in the female reproductive system. First is pair of ovaries, pair of oviducts, ureterus, cervix,
vagina, external genitalia, and the last is the mammary glands. So this is the diagrammatically section view of the female pelvis showing the various parts of the reproductive system. So this is the diagrammatically section view of the female reproductive part showing the reproductive parts. So this is the ureterus. After ureterus, this is the main part of the female reproductive system, that is the urinary bladder, and after urinary bladder, this bluish part is known as the pube symphysis, and after that this pinkish part that is known as the urethra, and after urethra this is the clitoris, and after that this is the labium minora, and after this labium majora, and the last is the vaginal orifice. This is the anus, and after that anus, this is the vagina, and in the above of the vagina this is the rectum, and above the rectum this is the cervix. So all these are the various parts of the female reproductive system that showing the reproductive part of the human reproductive system. Next, first we will start our main important female reproductive organ, that is the ovaries. They are the primary sex organs. ये जो हैं ovaries जो हैं, these are the primary female sex organs. They produce the female gamete. जो main function है या main work जो है ovaries का, that they produce the female gamete. Female gamete जो होगा, that means they produced with the help of the ovaries. That is the ovum. They also produce steroid hormones. Ovaries जो होती हैं वो steroid hormones को भी produce करती हैं. That is the ovarian hormone. That means ovarian hormone or the steroid hormones, they can't produce without the ovaries. 2 to 4 centimeter in length and connected to the pelvic wall. जो main length जो है ovary की वो कितनी है, 2 to 4 centimeter, and they connected to the pelvic wall and uterus by ligaments. और उसके बाद वो uterus के साथ connect करती है with the help of a ligament. Each ovary is covered by a thin epithelium enclosing. हर एक ovary जो है that is connected with the help of the epithelium enclosing and ovarian stroma. Next, ovarian stroma. What do you mean by ovarian stroma? होता क्या है ovarian stroma? It is the matrix of the ovary. It is the matrix of the ovary and is divided into 2 zones. अब ये जो आपका ovary stroma है, ये matrix है. It is the matrix of the ovary and it has mainly 2 zones. And these 2 zones are the peripheral cortex and the second is the inner medulla. That means 2 zones are peripheral cortex and the inner medulla. Next is the accessory ducts. What do you mean by the accessory ducts? They are the oviducts. क्या है ये? Oviducts है, ureterus है, and the vagina. Accessory ducts, that means they contain the 3 major parts, that are the oviducts, uterus, and the vagina. Oviduct, it is also known as the fallopian tube. Each fallopian tube is 10 to 12 centimeter long. हर एक fallopian tube जो है, that means its length is 10 to 12 centimeter long. It extends from the periphery of each ovary to the uterus. कहाँ से extend करती है ये fallopian tube जो होती है? From the periphery of each ovary to the uterus. Next, infundibulum. It is the funnel-shaped part closer to the ovary. Funnel की shape की तरह होती है and it is very closer to the ovary. Next, fimbriae. They are finger-like projections होती है. Fimbriae means they are finger-like projections at the edges of the infundibulum that aid in collecting the ovum. जो कि क्या collect करते हैं? They collect the ovum after ovulation. Ovulation की प्रोसेस के बाद जो होते हैं वो क्या कलेक्ट करते हैं? वो कलेक्ट करते हैं ओवम को and these are the finger-like projections. Next, ampulla. It is a wider part of the oviduct. Oviduct का सबसे wider part जो है that is the ampulla. सबसे wider part है ये ovary का. Of the oviduct after the infundibulum. Infundibulum के बाद जो wider part है oviduct का that is the ampulla.
Next, isthmus, it is the last part of the oviduct. Isthmus जो है, that is the last part of the oviduct and it has a narrow lumen and joins the uterus. ये narrow lumen है और वो directly किसके साथ join करता है? It joins with the ureterus. This is the diagrammatically section of the female reproductive system. Diagrammatically section view of the female reproductive system. So this is the uterine fundus, and after uterine fundus is it the uterine cavity, and after that it is the innermost layer is known as the endometrium, and the centermost part is the myometrium, and the outermost part is known as the perimetrium. This is the vagina, and before the vagina this is the cervical canal, and before cervical canal this is the cervix, and this is the ovary, and this is the fimbric, that are finger-like projections जो कि क्या करती हैं, स्टोर करती हैं किस चीज को, ovules को, and this is the infundibulum, this is the ampulla, and this is the isthmus. Joining all of these, that is the infundibulum, ampulla, and isthmus, they all combine, and after the combining of these three, they forms the fallopian tube. They forms the fallopian tube. So this is the diagrammatically sectioned view of the female reproductive system. Next is the ureterus. अब ureterus क्या होता है? It is also called as the womb. Ureterus को हम womb भी बोलते हैं. It is shaped like an inverted pear. Inverted pear की तरह इसकी shape होती है. It is attached to the pelvic wall. Pelvic wall के साथ ये attached होता है with the help of ligaments. The ureter is the part where the embryo dwells. Ureterus एक ऐसा part है जहाँ पर कि embryo dwell करता है into the fetus, और वो embryo dwell होने के बाद किसमें dwell हो जाता है? Into the fetus. The uterus opens into the vagina. अब ये ureterus जो होता है वो किसमें open करता है? They opens into the vagina through a narrow cervix. Uterine wall has 3 layers of the tissues. अब uterine wall जो है, that means it contains the 3 layers of the tissues, and these 3 layers are perimetrium, myometrium, and endometrium. The innermost is the endometrium, centermost is the myometrium, and the outermost is the perimetrium. Perimetrium, it is a thin external membranous layer. सबसे thin external membranous layer जो है, that is perimetrium. Myometrium, it is thick middle layer made up of smooth muscles. ये thick middle layer है myometrium जो है, जो किस चीज को मिलकर बनी हुई है? Smooth muscles को. It exerts strong contractions, और ये इसकी वजह से strong contractions होती हैं during the delivery of the baby. जब baby की delivery होती है, at that time these muscles are strongly contract. Endometrium, it is the inner glandular layer. ये सबसे अंदर वाली glandular layer है that lines the uterine cavity, जो कहाँ लाई करती है? uterine cavity में, and it undergoes periodic changes. इसमें जो थे वो periodic changes आते हैं during the menstrual cycle. So this is all up to the uterus in the female reproductive system, and this is the part number 1 regarding the human reproductive system, and our next topic that is to be delivered in the part number 2, and we will continue our next topic from the cervix.